Behind Prime Minister Narendra Modi, there is a gracious presence of Sunil Bharti Mittal as well, because they are passing to that particular booth which has been set up by that particular company. But if we talk about the data, Aisha, we have been told that Jio has purchased the maximum frequency, maximum the that particular if we talk about the data in person, 88,000 crore is the amount which has been invoked by Jio operator. If we talk about the services which has been purchased by the spectrum, so to say, the technical word for the same, 44,000 crore is something which has been purchased by Sunil Bharti Mittal, that is for the Airtel group. And if we talk about that of Vodafone and Idea, which they are currently in merger with, close to 18,800 900 something is the amount. That means we can say close to 19,000 crore worth rupees of spectrum has been purchased by the Vodafone and Idea group. So clearly these are the three operators who are now coming up with the rollout of the 5G services in the entire country. Back to you, Aisha. All right, so essentially, Nikhil, thank you so much for all that information. I also want to pose a question to Arun now. Arun, just give us a brief about how 5G really differs from 4G. Well, I could get your question properly. If you can just repeat. Sure. So just give us a brief about how 5G really differs from 4G. Why exactly is this such a big occasion for India? Well, see, we all know the speed of 4G and the difference it is going to create once 5G is in India. As far as speed is concerned, you will have 10 times more speed than 4G in 5G. And if I can put an example here, you have a 3 hours movie being downloaded in few seconds which with the 4G will take perhaps 10 to 15 minutes. So that's a huge difference, and the kind of quality video calling that you will have, it is unmatched with the 4G. And also the data speed which you will get, that is also something which is unmatched. So there is clear difference, a huge difference rather, between 4G and 5G. But the question here is that how it is going to change the lives of the people of this country. So it has multiple benefits. If you see, if you talk about the daily routine lifestyle of people, it will have huge impacts of it. If you want to download something, it will be just in few seconds. If you want to have a video calling or any work that you want to do through video call, that is something which will have a very, very seamless experience, and especially education, which is something which is being promoted by the government as well. Online education, online meetings that takes place, in that we had seen in 4G there are a few various issues in few areas of the country, and that is something which is going to be a seamless fine in the 5G technology. And that is something which is why Reliance Jio has chosen to demonstrate that angle only, the education angle, when you will have a teacher sitting in a Mumbai school and having connected with the students in 3 different states, in Odisha, Gujarat, and in a different part of Maharashtra. So that will show the quality of the video and how that communication, what is going to be the quality of that video. That is something which will be shown in the demonstration by Jio before the Prime Minister Modi. So these are the things which we can see is going to be the benefits of 5G as far as our education and the daily lifestyle is concerned. But other than that, as far as the economy is concerned, that is something which will have huge benefits of the 5G, because once you have the high-speed 5G in the market, various new enterprises will come, various works will have benefits of the robotic system, the machine system, which will work with the 5G technology. And in fact, healthcare sector
industry is also going to get huge boost. The medicine, those video calls, those high resolution video calls which is needed, that can be done in that as well. So every sector will have its own advantages, and that is something which Prime Minister Modi is seeing at this moment, that how different sectors are going to witness with this 5G technology, 5G spectrum in the country. This is something which these people at different stalls are showing them, that how on the education front this 5G is going to benefit the country, how in the MSME sector 5G is going to benefit, how in heavy industry sector 5G is going to work. So these are the things, these are the presentation, these are the things which these different stalls are showing to Prime Minister Modi at this moment as we speak. Absolutely. Arun, essentially now I also want to bring in our guest, Professor N.K. Goyal, who is still on the broadcast with us. Mr. Goyal, the question I wanted to pose to you is, now how long do you think it's going to take for 5G to really give out a massive change when it comes to India's landscape? Yeah, you are right. In fact, one of the things which are less talked is how does it going to promote investment and economy. For making 5G throughout the country, we'll have to do lots of fiberization, lots of small towers will come throughout India, and that will involve huge investment and huge turnover for the economy. At the same time, let me also share with your viewers that because the speed is very high and low latency, so one of the biggest cases which have been discovered world over are in case of robot surgery and driverless car. And within India, we are developing cases across all industry sector. Till 4G, it was a telecom network, telecom to telecom. Now 5G has become interconnected. We call it IoT or M2M connected. So now the use cases are not for telecom communication, but for agriculture, for education, for health, for aviation, for infrastructure, for everything. And that is where the change is there. And that is why lots of new investment and lots of new scopes coming up. And luckily, we have been successful in our auction of this spectrum. Our operators are keen. Our government is keen. Launching today, and we have also seen Honorable PM launching 5G domestic core. This is something very interesting, very, very, very interesting. Because this is for the first time that India has developed a 5G core. So this is a big benefit to industries, users. Of course, there will be, still we have to watch as to what are the use cases to be used by an ordinary customer. For schools, it is there. For college, it is there. For agriculture, it is there. For industry, it is there. But for ordinary customer, other than that, the high speed download of the videos and clarity of the video, what else use cases will come up are yet to be seen, and that is in the process of making. Absolutely. Now, I also think it's pretty fair to say that our dependence when it comes to other countries and importing things, that's also going to be reduced, correct? Yeah, in fact, because the 5G technology is across the world, so any use case coming up in any part of the world is also applicable in India. We have to use it. But more than that, now in the world, India is seen as the largest economy. India is seen as a leader and not as a follower. So even these our cases of agriculture, cases of education, cases of health, remote health, they are being seen by the world as a testimony, and they want to copy it down. In fact, next week there is a big conference in France called World Electronic Conference, in which India is going to present the use cases for 5G and other technologies. So we are hoping big boost in the exports and manufacturing. Thank you. Thank you, Mr. Goyal, for all of that perspective when it comes to this exciting launch. But stay with us, because I also want to cross back over to our reporters Arun Dhanta and Nikhil Lakwani, who are joining us live from Pragati Maidan. Arun, I want to come over to you first. What I really wanted to ask you now is essentially, once 5G is launched, what's going to be taking place right after that? Is it going to be immediately available for consumers? Well, see, what we are told is that today it will be launched by Prime Minister Modi here in Pragati Maidan, and in fact within
month or two, we will have full rollout of 5G in the 13 cities which has been selected. So by the end of this year, we will have 5G enrolled in 13 cities of the country. That's the initial plan that the telecom companies have told us about. And remember that it has only 3 telecom companies who have got the spectrum, and the largest chunk has of course gone to Reliance Jio. And then of course once in 13 cities we will have the 5G enrollment, then of course the planning will be made for the larger rollout, the rollout in the other parts of the country, because that's when we will see the massive changes in the lives of the people of rural areas, people who are living in the villages. And that is something which is going to be very, very interesting, that how the response of the people is going to be in that rural areas. But initially we are told that by the end of this year we will have the 5G services enrolled in 13 cities of the country, and there will be a massive difference than 4G in 5G, and it will really going to bring changes in the lives of people. The virtual reality, you will have the real-time experience of the things in front of you, augmented reality, artificial intelligence, all these things which will come along with the 5th generation. That is something which government has been planning for the very long time, to give that best experience to the people of this country. When you have 5G rolled out in various other countries, there were of course few hiccups initially about the 5. There were few myths about 5G. That has all been cleared, and the plannings have been made that how we can tackle those issues. And now finally we have a day when 5G will be rolled out, and none other than Prime Minister Modi himself visiting here Pragati Maidan, becoming part of the launch of 5G, a plan which his government has been working on for last 5 to 6 years. And massive research work has gone into to reach this day today, where you have launching of 5G in the country. Even as we speak, Prime Minister Modi is taking taking a round of the entire setup which has been created here in Pragati Maidan by different countries. We had just seen Prime Minister Modi, sitting on a chair playing that game. So these are the advantages of 5G, because Prime Minister Modi was playing that car racing game there. The gaming industry will also get a huge boost by the introduction of 5G, and when you have that the boost in the gaming industry, along with that the production of course will go up, and that will increase the revenue and also the jobs. And when you have a production of certain things, then you will have a domino effect on the resale and on the retail sector as well. So in a larger perspective, we can say that it will bring many benefits to the people of this country, and that is something which government is also planning. Government of Prime Minister Modi has also been talking about the 5 trillion economy. So this 5G launch, 5G usage is also going to play a major role in India becoming that 5 trillion economy. So the massive change is going to be witnessed in the lives of people of this country, and of course the additional advantages with the economy is going to get. That is something which is very, very significant. Production is something which will increase, not only the production of handsets, but the other sectors like gaming, industries related to the MSMEs, heavy industries. All these things will get huge boom. Very valid points, Arun. Now, essentially, I also want to bring in Nikhil Lakwani. Nikhil, what I wanted to ask you is, now for the next couple of years till 2024, we're going to be rolling out 5G across the country. By 2024, is our 5G network going to be advanced enough to really compete against the networks that you see in the US and China? Well, this
this is the poignant point which becomes here, and this is the crucial question, Aisha, which you have asked here. To start with my answer, I would like to reiterate the fact that as per the given details, since Reliance and the Jio, which is the top leader in the market for the telecommunication sector, they have purchased the maximum number of spectrum worth rupees 88,000 crore, and they have clearly mentioned in their statement saying that by Diwali this year, that means by in a few days from now, by the end of this October, we are expecting the rollout of 5G services, particularly for 4 major cities. That means for Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. So 4 top cities are going to be there, which are going to be provided with the 5G technology by the Diwali this year. This is the crucial point and the important point which comes here. And also, if we talk about the second highest bidder, the second top spender for the auction of the spectrum, which is the Airtel Sunil Bharti Group, they have spent close to 44,000 crore worth rupees of spectrum for the purchase of the same, and they have clearly mentioned in their statement that they are going to roll out for the all the urban cities by the year 2023. So by the end of the year 2023, we are going to expect the Airtel coming up with the 5G services for the urban sectors. But by the further year, that means by the end of the year 2024, majorly all the 3 top leader of the telecommunication sector, be it Reliance Jio, be it Airtel, be it Vodafone Idea, they all are going to roll out the 5G services in entire country. Then only we will get to know with how many countries they are going to compete in a year or. But as mentioned by our guest as well, that we have to become a leader as a country. We have to become a leader, and we are moving in that direction. We cannot be, in the league of following other countries. But if we talk about the 5G networks, there are many of the countries which have already gone ahead, Aisha. So this is the reason why we need to pace up. We need to scale up all our preparations, and in that direction only Prime Minister Narendra Modi has been moving. We have mentioned you in earlier as well that in the year 2017, the forum was set up, high-level forum was set up by the government of India for the same, for the rollout of the 5G services, as to what are the important points which are the sectors to be covered and how they are going to be poignant in the 5G networks which are introduced by different countries. So the report for the same was submitted in the year 2018, and now we are seeing finally that how the spectrums were rolled out early this year, and Reliance Jio has been the top purchaser of the same, and then we are finally going to be see that how the official launching of the same is going to take place by Prime Minister Narendra Modi in a short while from now. And as we speak, Aisha, in the visuals as well, you can see that Prime Minister is keenly looking for each and every detail. Not just he's on the receiving end, he is in fact asking the questions as well if there the need be. We can see that some kind of communication is currently happening between Prime Minister Narendra Modi and the person or the group of people who are behind the screen. So this is the demonstration that we were telling the viewers of CNN News 18 that the demonstration of the 5G technology is going to take place in front of Prime Minister Narendra Modi by all the top leaders. They are going to show that how the actual rollout is going to be looked by. So Prime Minister Narendra Modi in a way also is going to become the first person in entire country to be a part of this particular service, to be first person to video call for the 5G services. And in fact, in the visuals as well, a group of ladies can be seen here on the other end on the TV screen, and currently Prime Minister Narendra Modi is interacting with all the ladies, and this actually demonstrates as to what the speed time is, because earlier as well, if you go by the current services, it takes milliseconds or few seconds for the other person to receive the voice or the communication, for the better communication. But in 5G services, we are expecting that it is going to be smooth. And also, if we talk about the current infrastructure of the communication in entire country, we have seen if you travel through the Delhi metro as well, you lose connection. If you go in some of the places which are under the basement, you lose your connection, your networks are poor. In fact, the call dropping is one of the difficulty, one of the problem which the country has been facing for long, and this is the reason why the tightening of the grips as well has been happening from the government of India, particularly for the top operators as well. They have clearly been saying that, see, this is the point where you have to work with, because a lot of complaints were filed, particularly for call drop in entire country. But now with the rollout of the 5G
5G services, we are expecting that all the difficulties which were currently in the existing plan, existing infrastructure, it is supposed to eradicate, and the smoothness in the telecommunication sector is going to be witnessed by the country, because it is not just the communication sector. The technology and the data in person is used in different segments as well. We have been mentioning you Absolutely. since this morning, Aisha, that in the defense sector, in the education sector, many of the major segments is the place, including that of businesses as well, that there is heavy reliance over the networking and the data as well. Back to you, Aisha. Absolutely, Nikhil. Thank you so much for all that information. I also want to cross back over to our guest, Professor N.K. Goyal, who's again the chairman of the TEMA. Mr. Goyal, what I wanted to ask you is, something that our correspondents were also shedding light on is the fact that, call dropping is something that we see constantly. So this is going to be a big boost to that. We're not going to see that as much anymore. We might not even see it entirely, especially when you come to hill stations and the connectivity that you see there. What do you think is going to be needed? Now, 5G is one major improvement when it comes to our communication networks. But what do you think we need to see in the future when it comes to making India #1 in terms of making communication key and having the best communication network possible? Yeah, thanks for the question. And let me answer in 3 points. One, as I said, I say again, so far in the world, there were 2 countries who were making equipments for wireless. We have become the 3rd country for 4G. Now, when it comes to 5G, we have already launched domestic 5G. It was shown on the TV by Honorable PM here. So that is the second plus point. Third plus point, as I said before also, it is going to lead to lots of investments in the infrastructure. And customer is going to be at par with the world for any technology. Now, these 3 things together means increased investment in Make in India, increased economic development, and also we are laying foundation for 6G. Interestingly, in 6G, even the specifications are going to be made in 2025, and we hope it by 2030. But because of the policy of the government of India, because we have launched 5G, 4G here, we hope to catch up with the world in the same time. And also, the government has been very, very proactive in terms of development of the telecom sector. They have given lots of reliefs and packages reforms, as we all know. And they are also going to amend now the Indian Telegraph Act 1885. And the new law has received lots of plus points from the industry and stakeholders. All these 3 put together, India is now pride country in the world to catch up with everywhere. Thank you. Absolutely. Thank you so much for that response, Mr. Goyal. Now, I also want to cross over to our correspondent, Nikhil Lakwani. Nikhil, so essentially, when are we expecting the launch? How long is it going to take until we see the Prime Minister giving out that official launch of 5G services? Aisha, that clearly depends on how much interested Prime Minister Narendra Modi is in all the exhibition which has been set up inside that particular center which has been created at Pragati Maidan. And we are now seeing in the visuals as well that gradually Prime Minister Narendra Modi is moving towards the other direction where the main stage is. So we can expect that in few minutes from now, Prime Minister Narendra Modi will officially be launching the 6th edition of India Mobile Congress, which is going to take place starting from today till 4th of October in the Pragati Maidan in the national capital Delhi. And in fact, we have been told that Prime Minister will officially launch the 5G services on this 6th edition of the same, and then there will be addressing of the event by PM, followed by the other dignitaries as well. In fact, we have been told through the schedule that the top industrialists as well, the top operators as well, they are also expected to address the gathering because there are a lot of people who have been waiting here since this morning to get a glimpse of Prime Minister Narendra Modi. In the visuals, clearly now you can see that this is the hall which is full of people. They are waiting to wave a hand to Prime Minister Narendra Modi, and also to hear some of the wise words as to what the government is thinking and how they are actually taking a step forward to
plan the actual rollout of the service, and he will be actually acquainting us with all the facts, all the backing which has gone into the years, because it is not just a matter of few months, it has been happening for few years now, when the preparation for the rollout of the 5G services in entire country actually started, because we have been seeing post 2014 as well that the government has been very proactive in taking the country forward, particularly for the field where it needs to take a step further. So in a short while from now, we are expecting that Prime Minister Narendra Modi will grace the gathering which has been here. All the people are here. This is the room which is full of people. There is this SPG deployed. Nobody is allowed to move beyond a particular point. In fact, the entry and exit gates, Aisha, they have also been closed by the security officers who have been deployed here. So in a short while from now, we can see that the stage where the chairs have been set up which are currently empty. In a short while from now, all those will be filled by the top leaders of the industry, and Prime Minister Narendra Modi will officially be launching the 6th edition of India Mobile Congress, and also he will officially launch the rollout of the 5G services. But to reiterate the fact, Aisha, by the end of October, in fact by Diwali, we are expecting that the rollout of 5G services, particularly from the Reliance Jio group, is going to take place in 4 of the major cities in the country. So all the people are now gradually waiting, all the eyes now there on the stage, where the people are now gradually waiting for Prime Minister finally to come. All right, Nikhil. Now, also another thing that I'm curious about is how this is really going to impact rural education, because we also remember during the COVID times, we saw many obstacles because people really didn't have access to technology, and now we are launching 5G. So this is something that's going to be very important when it comes to education as well, because it's going to massively boost our capabilities when it comes to education, when it comes to educating the next generation of this country. So what kind of impact are we going to see on the ground when it comes to education? Well, Aisha, the use of technology and communication in the field of education has been working for years now. But the point that you have raised becomes equally important here, because you have mentioned and you have directly hinted out at the rural areas, because that is the place where the tech. Thank you so much for giving us all of that information on this. Now I'm also crossing over to Debashish Sarkar, who's joining us. He's the editor of News 18 Tech. Mr. Sarkar, tell us more about how much of a boost this is going to give to us tech-wise, because this is a very exciting moment for India, especially when it comes to tech. Right, exactly. Thank you so much for having me on the show. And the thing is, we have to first acknowledge the fact that how easily and how quickly 5G just got rolled out in India. It's like just a month back in August, we just saw the spectrum auctions end over a week's time. And then suddenly, right now, we are seeing the 5G launch happening today on 1st October. And by the end of October, like you said, that we are going to see 5G connectivity. For the people living in city, 5G will be mostly limited initially to getting higher mobile data speeds. It's like for watching videos and content and using other applications. But if you look at a wide perspective, especially for rural India, 5G is going to be important. If you're keeping aside the data speed for a moment, what is important is 5G will get low latency, thanks to the fact that we have, all the telecom operators have, shown interest in acquiring 700 megahertz 5G spectrum, and that will help get low latency to places where it is actually required. Now, why low latency is important? Education is one such sector where you have to give real-time tests, as well as real-time you have to consume videos, as well as respond to it. Now, what low latency does that if you're spread across a longer 2 different regions globally, what you hear from one part of the world to what you get to hear right now, there is a lag. And the easiest form of latency can be explained by the fact that if you're using any Bluetooth earphone and if you're streaming something on YouTube, you will find that the movie is, if you're watching a movie, for example, you will see that the video is slightly faster than the audio. So that is the lag that latency will take care of. And this lag is very crucial, because for medical use cases, for telesurgery and especially in the healthcare sector and education, if you have this lag, then the entire experience for the end users goes for a toss. And
That is why this managing this lag is the first most important thing of 5G. Second, of course, high data speed. You generally, if you have a mobile internet right now, most of the households in India and rural areas, they don't have broadband. They have a mobile phone, a 4G connectivity, which they use as a portable hotspot to connect to all their applications and go around with the day-to-day needs with the internet. But with 5G, they can actually have access to the high speed that is required to do their business, get information in real time. Like one of the best possible use cases of 5G that can think of right now is disaster management. In rural areas, whenever there is some kind of a disaster happening, or if there is some prediction of a disaster like a flood or some storm coming up, the problem is getting the information around gets difficult. Now, if we have 5G connectivity and services like, the moment there is a prediction and say the government can just flash it on All India Radio or on Doordarshan, then this real-time exchange of information will happen and it will be really helpful. And talking about healthcare, like we all saw during COVID times, tele consultations became a hit thing because you were not able to visit, you can't visit your doctor physically and just go for a checkup. At that point of time, you could have done your tests separately and then share the reports to the doctor, and the doctor can actually advise you. For that, you need a seamless connectivity. And most importantly, talking about the tele-surgery bit, basically we have all seen futuristic YouTube videos where, and movies as well, where, somebody somewhere is showing a 3D diagram of surgery happening, and you can actually see it in augmented reality, like using any VR glasses, and then you can actually replicate that on a person. So basically, you can get training instantly. You can do stuff. So this is where the most important 5G use cases will be happening. Of course, it will be beneficial for agriculture as well. You will get to monitor the condition of crops, get exact predictions of the weather, and overall, I think 5G, if you look at from an urban perspective, it will be mostly limited right now to data speed, but for rural India, 5G will play a massive important role. And another aspect is that in urban areas, talking about tele-density, the problem is we all have Wi-Fi networks at our house, and we are all on 4G in urban areas. But the problem is with so much network congestion happening, you're not able to get a true experience of the data that you're using. Absolutely. And this is where 5G will create a difference. You will expect calls to drop less. You can expect faster internet connectivity. Actually, whatever money you're paying for the data, you can actually expect to get that kind of data. So yes, that is the major difference between how 5G will impact rural areas as well as urban areas in India. Now, as an editor of tech, are there any concerns that really emerge when it comes to the rolling out of 5G? Concerns right now from a use case perspective, what we have to think about is the fact that with the 26 gigahertz and 700 megahertz coming into the picture, how will your mobile phone battery respond? If you just recall when the 4G thing happened, there was a sudden drop in battery life of the mobile phones because the phones were made for 3G connectivity. Yes, it did support 4G, but we saw that we had to replace our phones to a better phone with a better battery life. So with 5G, I'm a bit concerned about the fact that the immediate use case problem with 5G may be the battery life. And also another realistic problem that we saw during 4G as well, and it always keeps on happening. Every time there is a change in some kind of Telecom policy, users may be susceptible to scams. Scams like, as 5G is a very new technology, people generally, they don't know much about it right now. It will take some time to get the people educated. Now what happens is there will be scam calls like, hey, you want to upgrade to 5G, you need to pay this much money. And you understand scams like this that the people will have to be very careful about, because this entire 5G rollout will be seamless. People may be required to change their SIM cards, but that's all about it. And then there is nothing they have to do sitting at their homes. And these are the two practical concerns right now the moment 5G gets live. Apart from that, I think there is none. You can expect, your lives are going to get better with 5G. Absolutely. Now, also beyond this, also tell us what else you think is needed in India when it comes to the technology industry to really give it a major boost beyond 5G. So I think
biggest advantage after 5G rollout should be how this can be used to automate mundane tasks. There is a lot of things right now. If you go to any government office or if you just see in general, what happens is that there is a digital form, as there is a paper form, and there is a hotspot between online as well as offline. Now, what 5G should actually enable, and it's like a dream use case for most Indians right now, should be automation. 5G should enable automation at the most basic level. It's like you should be, suppose if you want to know the actual, suppose for example, the status of a water truck that is coming to your region to serve you drinking water, for example, in a rural area, you should be able to know that information in real time, just pressing a few buttons on your mobile phone. That is it. And also, you will have to understand that the entire process of getting documentation, digital documentations and other, like for example, Aadhaar card and everything, this entire process should be automated with 5G. It's like there shouldn't be any physical interference. You shouldn't be required to fill in any forms. If you have a biometric data, you have your face scan, everything should be done on your mobile phone. I think that is the best possible use case of 5G that I can imagine. A very good morning. This is the voice of Shilpa Ratnam, and I would like to go across to my colleague Nikhil Lakwani, who is joining us from Pragati Maidan. Nikhil, if you can hear me, we see the audience seated there at the India Mobile Congress. Who are the dignitaries? We expect to be addressing them very soon. And can you take us through the immediate schedule of what is to take place at the Maidan? Okay, so Shilpa, as per the given details, we have been told that in the main auditorium which has been set up at Pragati Maidan, Prime Minister Narendra Modi is going to officially launch the 6th edition of India Mobile Congress, and also this will be the same event where the 5G services officially will be thrown open for the country, and it is going to be first rolled out by the Reliance Jio Communications by the end of the October, or by Diwali is what the statement says, which has been issued from Jio, that in 4 of the top countries we can expect that by Diwali or by October end it is going to be rolled out. And also we are expecting that Prime Minister Narendra Modi in a very short while from now he is going to be present inside the main auditorium where there is huge gathering of people who are waiting since morning to hear from Prime Minister Narendra Modi as to what the 5G technology services is all about and how it is going to be rolled out and what were the preparations which have been put into by the government of India. Okay, we can see in the stage Mr. Mukesh Ambani, who is the big leader and industrialist from the Reliance Industries. He has now come at the stage. There is this another top leader, Sunil Bharti Mittal as well from Airtel Group, and we can see Kumar Mangalam Birla as well from Aditya Birla Group, who owns the Idea and Vodafone merger. They all have sat here at the main stage, and there is also presence of IT Minister, Mr. Ashwini Vaishnav. And Nikhil, also stay the with MOS us to bring our viewers IT up to Ministry. speed. This is taking place at the India Mobile Congress in Delhi, and on your screens on the right hand side is the chairman of Reliance Jio, Akash Ambani, who is briefing the PM on the shortly to be launched 5G services. So that's taking place on the right of your screens. On the left, we have the audience seated there for the inauguration. And as my colleague was telling you, Mr. Mukesh Ambani has taken the stage as well. Nikhil, back to you. Do take us through the latest updates from Pragati Maidan. Okay, so Prime Minister Narendra Modi is what we can say now that he has officially visited the exhibition area where all the top leaders, top communication experts were there. They were briefing Prime Minister Narendra Modi, and they were also demonstrating as to how the 5G services are going to be rolled out in entire country and the impact of the same, usage of the same, and in which segments, which industries, which places the use of 5G technology is going to be there. And not just this event, Shilpa, and this becomes a crucial point here, not just this event is about 5G, but there are now the talk where the 6G technology is also being talked about. There are many of the chambers, many of the stalled inside the exhibition hall where there was the demonstration of the 6G services as well. This becomes equally important at this juncture. And in a short while from now, we are expecting that Prime Minister Narendra Modi, he will finally be here on the stage, and he is expected to address the event for all those gathering who have been here. They have
have come here from different industry, particularly from the DOT, which is the Department of Telecommunication, and other important ministries as well. And there are people from different background as well who are present here since morning 7 to 8 a.m. to hear from Prime Minister Narendra Modi as to what their plans are and how the use of technology is going to put forth the country in the global market. So in this stage, clearly we can see that there is already this August presence, which is there. We can see Kumar Mangalam Birla, we can see Mukesh Ambani, we can see Sunil Bharti Mittal and IT Minister Ashwini Vaishnaw, who actually saw the demo in one of the leading IIT in the country, where he told all the countrymen that soon the country is going to witness the rollout of the 5G services. And then we have Shri Chauhan as well, who is the MOS of IT Ministry. So all the leaders are there. In fact, Shilpa, we have been further told that the top who are the communication expert, the leading communication companies, that means Jio, which has purchased the highest spectrum worth rupees 88,000 crore, and then there comes the Airtel as well, which has purchased spectrum auction worth rupees 44,000 crore, and then comes the Vodafone Idea merger, which has purchased. Okay, so Prime Minister Narendra Modi has finally arrived at the stage. In the visuals, you can see he is being welcomed by a round of applause, Shilpa, by all the people who are present here. Prime Minister Narendra Modi is what we can see on the screen. He's being greeted by all the dignitaries who are present here. So in a short while from now, we are going to see the official launch of the 5G services in the entire country by Prime Minister himself. And also this is the 6th edition, Shilpa, that we are talking about, and this is also going to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. India Mobile Congress with the name. It is happening in the Pragati Maidan, and this is the day one, and it is going to last till 4th of October. And we have been told that the different states and their IT ministers, they are also going to hold different meetings in this arena to chalk out a plan as to how the states can contribute in rolling out the services pertaining to the 5G. This becomes crucial point here, because in defense sector as well, the technology infusion is going to take place in Indian Army for future warfare. Education sector as well, we have been telling you since morning that it becomes equally important. In the urban sector, we have been seeing, particularly in the education field, that the use of communication is already in circulation, but the rural segment is the place where the rollout of the same needs to be seen. And we have been told that Prime Minister Narendra Modi, firstly, all the top operators, starting with Jio. So if we talk about the Jio, all the case studies are to be shown and to be demonstrated to Prime Minister Narendra Modi. So the Jio, we have been told that they were supposed to connect one of the teacher from Mumbai, and then there were different students as well which were supposed to be connected from Maharashtra, from Odisha, from Gujarat, to demonstrate how the technology is going to be rolled out, how smooth the connection is, how fastest the communication takes place in the 5G services. And also there's this another top leader company as well in the field of communication, where they were supposed to connect with the laborers who are currently working in one of the tunnel, which is the construction sector of the Delhi Metro, to show the smoothness of the 5G connectivity. And we have been told by the government sources that it has not been a preparation of months, but for years. In the year 2017, the high-level committee, high-level forum was set up with a group of people who were coming from different domains, different industries, academics as well, and then there were people from bureaucrats, government as well. They were supposed to chalk out a plan that how the 5G technology is going to be introduced in the country, and the report of the same was submitted in the year 2018. And finally, after 4 years, we are जी, श्री सुनील जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री सेक्रेटरी राजारामन जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब टेलीकॉम क्षेत्र के इंडस्ट्री के सब प्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया के सभी साथी, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि देश के तपस्वी नवदधिची आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस पल में स्वागत कर रहा हूं, जहां देश के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य संस्कृति रहा है कि नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और इसी के चलते उनका ये आग्रह भी रहा है
कि देश में आत्मनिर्भर भारत हो, और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन के कारण आज देश ने 4G बना लिया है, 5G बना लिया है और इस दशक के अंत तक 6G भी बना लेंगे। और आप सब जानते हैं कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने टेलीकॉम क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स भी किया है। मैं एक ही उदाहरण देता हूं। आज हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सुबह में स्पेक्ट्रम्स के लिए चार्जेस भरते हैं और कुछ ही घंटों में उनको स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो जाता है। ये नया भारत है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। और आज टेलीकॉम क्षेत्र में एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तब हम सबको ये पूरा भरोसा है कि दूर संचार आने वाले समय में, अमृतकाल और संकल्प काल में हमें नई गति देगा, नई तेजी देगा और ऊर्जा देगा। और उसी ऊर्जा और गति के साथ हमारे गतिशील प्रधानमंत्री जी के विजन को भारत की जनता की सेवा में ये 5G सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आप सभी जनों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संदेश के लिए। और now inviting the Honorable Minister for Communications, Railways, Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav ji, for his address. परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री के कैप्टन्स श्री देवू सिंह चौहान जी, सभी साथी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में 5G सर्विसेज का शुभारंभ कर रहे हैं। आज का दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है, डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज़्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। हर घर तक फाइबर पहुंचे, इसके लिए आपने एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है। आगामी महीनों में आपके इस सोच से दूर दराज के गांवों तक एक बहुत अच्छा एक परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपने BSNL को एक मार्केट स्टेबलाइजिंग फोर्स का दर्जा देके 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया, जो कि ऐतिहासिक है और जो कि
देश के ऐसे क्षेत्र जिसमें आज भी बीएसएनएल के ऊपर बहुत भरोसा है, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये पैकेज है। इन सभी प्रोग्राम के साथ आपने जो विशेष महत्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो है भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर, और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने, तो सारी बाधाएं पार कर कर देश सफल होता है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से देश ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी तैयार की है। आज दुनिया भर में भारत में विकसित 5G टेक्नोलॉजी की चर्चा है, और बहुत अच्छी संभावना है कि आगामी वर्षों में भारत एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लीडर के रूप में इमर्ज होगा। मैं फिर एक बार भारत के टेलीकॉम और डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड लीडर बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। And now, ladies and gentlemen, we invite the views of our industry leaders, the three stalwarts, the telecom service providers who have been working very closely in collaboration with the Government of India, and they have brought about a remarkable change in the digital communication sector. In fact, wherein the mobile technology today has truly become an instrument of citizen empowerment. So we invite now the views of Shri Mukesh Dhirubhai Ambani ji, the Chairman, Reliance Industries Limited, inviting him for his address. Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Minister Shri Vaishnav ji, Honorable Minister of State Shri Chauhan ji, Secretary Telecom Shri Raja Raman ji, my good friends from industry Sunil and Kumar, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. My hearty congratulations to DOT and COAI for organizing the 6th edition of the India Mobile Congress. I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud. And to both COAI and DOT, I can say that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress. Today is also very special because it coincides with our national celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, has shared an inspiring vision of making India a developed nation by 2047. Every policy and every action of the government is skillfully crafted to propel India towards that goal. The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. First, 5G and 5G-enabled digital solutions can bring affordable and high-quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies
so that they can earn more and make India globally competitive. Second, 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. This will make services of the best doctors digitally available anywhere in India, dramatically improve the speed and accuracy of diagnostics, and enable real-time clinical decision-making. All this will enhance health, wealth, and happiness of all Indians. Third, 5G can bridge the gap between urban and rural India by accelerating digitization and intelligent data management of agriculture services, trade, industry, the informal sector, transportation, and energy infrastructure. This will create huge efficiencies in all economic activities, making India a hub of innovation and also help us mitigate the climate crisis. 4, 5G can make available the same powerful productivity tools to small-scale industry and commercial enterprises as are used by large capital-intensive businesses. This will drive modernization and profitability of all sectors of India's economy. And fifth and final, by bringing artificial intelligence into every domain, 5G can power India's emergence as the world's intelligence capital. This will help India become a major exporter of high value-added digital solutions and services. Achieving these 5 goals will trigger a huge explosion of entrepreneurship in our country, which in turn will attract even larger investments and create millions of new jobs for our young people. By harnessing the combined power of demography and digital technologies, India can become the world's leading digital society, setting a benchmark for simultaneously achieving the dual goals of acceleration of growth and inclusion in development. Acceleration of growth by making India a $40 trillion economy by 2047, up from $3 trillion today, and inclusion in development by increasing our per capita income rapidly to $20,000 from $2,000 per capita today. Therefore, it will not be an exaggeration to say that 5G is like a digital Kamdhenu, the heavenly cow that grants whatever we desire. Esteemed dignitaries, the rollout of 5G in India is not an ordinary event in India's telecom history. It carries the keen expectations and the high aspirations of 1.4 billion Indians. With 5G, India will take longer and faster strides towards Sabka Digital Saath or Sabka Digital Vikas. India may have started a little late, but I want to assure all of you, we will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. And as an industry, we will ensure that we have the highest quality and the most affordable rates that anyone else has in the world. Today, I want to reiterate Jio's commitment to deliver 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our district by December of 2023. Most of Jio's 5G is developed in India and hence carries the stamp of Atmanirbhar Bharat. On this occasion, I would like to congratulate Honorable Shri Ashwini Vaishnavji and the Government of India for their efforts to strengthen BSNL. A strong BSNL will bring the balancing presence of a government entity in this very strategic sector. Most respected Pradhan Mantriji, before I conclude, I would like to express a deep-seated emotion of pride in my heart, a pride felt by every Indian. Your leadership has raised India's prestige, profile, and power globally like never before. In today's fast-changing world, there will be no stopping a resurgent India from soaring to the top, a place that is rightfully ours. India and Indians can't settle for anything less.
all of us at the India Mobile Congress assure you that we will work together and walk together under your guidance towards the glorious future that awaits our nation. Thank you and a very happy Navratri to all of you and all my fellow Indians. Thank you, Shrimani, for sharing your vision and the commitment towards delivering the 5G services to the citizens of the country and shaping a new progressive smart India. और अब आमंत्रित हैं श्री सुनील भारती मित्तल जी, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस। उनसे निवेदन है सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी, श्री अश्विनी वैष्णव चौहान जी, सेक्रेटरी टेलीकॉम, मेरे इंडस्ट्री के साथी मुकेश अंबानी जी, कुमार बिरला, मेरे पुराने हमसफ़र राजीव चंद्रशेखर जो यहाँ आज मौजूद हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पिछले कई दशकों से मेरे साथ टेलीकॉम में चले हैं, उन सबका आज स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम दिन है देश के लिए। एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और मेरा ये मानना है कि इस युग की शुरुआत जो ये 75वीं साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम पे हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये एक देश में नई जागरूकता लाएगी, एक नई एनर्जी लाएगी और इससे जैसे अभी मुकेश ने भी बताया कि बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देशवासियों के लिए खुलेंगी। जो रूरल एरियाज़ हैं, जो आज शायद कुछ अभाव महसूस कर रहे हैं, उनको हर चीज़ से जोड़ा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस बात का गर्व है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझते हैं और बाखूबी से सजाते हैं। मैं दुनिया में जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, टेक्नोलॉजी की अप्रिसिएशन तो शायद बहुत लीडर्स करते हैं, और उसकी बारीकी से समझ और उसकी जोड़ना देश की उन्नति के लिए मेरे हिसाब से शायद जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता। मैंने बहुत क्लोज से देखा है, जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो ई-ग्राम लाने वाले सैटेलाइट कनेक्टिविटी से सारे गांव को गुजरात में जोड़ा गया ताकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको जल्द से जल्द हर चीज़ मुहैया कराई जाए। ड्रिप इरिगेशन का काम हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जब होती थी तो गुजरात सबसे आगे निकलता था। इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए सबसे आगे आते थे क्योंकि उनको मालूम है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे नेता देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कुछ आके सबके सामने विजन रखे, उसमें डिजिटल इंडिया का एक विजन था जो हमने पकड़ा, और मेरा ये मानना है कि उस विजन के बिना इस पेंडेमिक में हमारी शायद देश में बहुत दुर्गति होती। आपने आके जब ये डिजिटल विजन दिया, उससे एक एक्सेलरेशन हुई, और मैं मुकेश की आप सराहना करूंगा कि उन्होंने आके जो हम 4G ऑलरेडी चला रहे थे उसको बहुत गति दी और हम सबको भागना पड़ा, बहुत तेज से पकड़ना पड़ा। और जब पेंडेमिक की मार पड़ी तो रातों रात ट्रैफिक शहरों से गांव में पहुंचाया, दफ्तरों से घरों में पहुंचाया। इस देश की एक मिनट के लिए भी धड़कन नहीं रुकी। हमारा काम लगातार चलता रहा और डिजिटल विजन को उसका श्रेय जाता है। मोदी जी ने बात की मेक इन इंडिया की, इन्होंने नारा लगाया लाल किले से मेक इन इंडिया का। मैं आज ये कन्फेस करता हूं कि मेरा ये मानना था कि मेरी ज़िंदगी में इस देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन पाएगी, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। 500-600 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी। उससे थोड़ी उम्मीद आई, पर आज तो ये रियलिटी बन गई है कि ये देश मैन्युफैक्चरिंग का देश बनने जा रहा है। डिजिटल के साथ उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का नारा लगाया। हर महीने यूनिकॉर्न पैदा होने शुरू हो गए हैं, और मेरा ये मानना है कि 5G के तहत आने वाले सालों में सैकड़ों यूज केस
हजारों और एंटरप्रेन्योर और दर्जनों और यूनिकॉर्न इस देश में पैदा होंगे। वो भी उसका श्रेय स्टार्टअप इंडिया को जाता है। मोदी जी 40 साल पहले इसी अक्टूबर में 1982 में ताइवान में मैंने एक पुश बटन टेलीफोन देखा और उसको हिंदुस्तान में लेके आया, यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। आज 40 साल के बाद मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज वही भारतीय एयरटेल, जो कि बहुत छोटी उम्र में अपना टेलीकॉम में कदम रखा था 40 साल पहले, आज 5G में आगे सबसे आगे चल के इस देश की सेवा में जुटी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारती के सब लोग और एयरटेल के सब लोग पूरे जोर से, पूरी अपना हिम्मत से 5G को देश में फैलाएंगे और 2023 मार्च तक काफ़ी शहरों में और 2024 मार्च तक सारे देश में 5G का फैलाव करेंगे। और आज जब आप लॉन्च करेंगे इस 5G को, तो 8 शहरों में आज 5G एयरटेल की तरफ से उपलब्ध होगा। दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, बेंगलोर और कई शहरों में। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आके यहाँ आज सबकी शोभा बढ़ाई है। ख़ास तौर पे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा DOT को और COI को, जिन्होंने आज इस IMC को एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के लेवल पे आज लेके गए हैं। आज अगर आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि दुनिया में कहीं भी आप एग्जीबिशन देखेंगे उससे आज यहाँ कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश और देश के विकास की तरफ समर्पित आपकी भावनाओं, आपकी कोशिशों और विशेष रूप से 5G सर्विसेज की तरफ जो आपको सभी को ले जाने की तरफ जो कोशिश है, उसके बारे में हमें जानकारी देने का। और अब आमंत्रित करते हैं प्रोग्रेसिव आइडियाज़ और विजन श्री कुमार मंगलम बिरला जी की, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister for Telecom, IT and Railways Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Minister of State Shri Debu Singh Chauhan, Honorable Secretary Telecom Shri M. Rajaraman, Mr. Mukesh Ambani, Mr. Sunil Mittal. Thank you, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for your very inspiring presence today at the Indian Mobile Congress 2022. It is on the back of your vision and leadership that we will today witness a generational leap in technology. This is a leap that demonstrates India's prowess on the global stage and reinforces the telecom industry's role as the bedrock of digital India. Honorable Sir, we thank you for acknowledging the industry's role during the pandemic and for the path-breaking telecom reforms announced by the government under your leadership. I take this opportunity to also thank Minister Shri Ashwini Vaishnav for steering the sector so skillfully into the future. I express my gratitude to Minister of State Shri Debu Singh Chauhan, Secretary DOT, Chairman TRAI, and all the officers of DOT and TRAI for accelerating the country's digitization agenda. As all of you know, the telecom industry has been one of the country's key growth engines, catapulting India into the top 5 economies of the world. It continues to play a transformational role, touching every aspect of our daily lives and work. Today we are set to make a giant leap into the future, driven by the reformist and futuristic policies of our Honorable Prime Minister. We are committed to the vision of building the digital infrastructure. Now being joined by Mr. Manish Vyas, who is the President, Communications, Media and Entertainment Business and the CEO, Network Services of Tech Mahindra. Very good morning to you, sir. We're watching the 5G rollout live at the India Mobile Congress. But to give our viewers some context, while those dignitaries
present and roll out 5G. So the first question that everybody is asking is, we know that the first rollout will happen in the 13 cities, the metros, including Delhi, Mumbai, Ahmedabad. But how soon can the user expect to get 5G? Well, I think as you are listening to the eminent dignitaries, you just heard Sunil Bharti Mittal, you are hearing Mr. Birla. I think it is very clear that the commitment that the industry has had to not just connecting India, but digitizing India is complete, and it is at the highest levels. The fact that India has seen such massive strides over the last 3 to 4 years, and before that, the previous decade, both from a digital economy standpoint as well as from an industrialization standpoint, I think one must stand up and salute the work that the telecom industry has done, because the power of connectivity and the power of connecting people is something that clearly has created such massive opportunities across the length and breadth of India. As the cities get connected and as the large mass of the more towns get connected over the next 12 to 18 to 24 months, we are going to continue to seeing a lot more economic and community activity that will spawn more innovation and more work around the digital revolution that India is clearly slated to continue to drive. So I'm very positive and confident that India will start seeing the 5G connections very, very soon. So we know because of 4G how the landscape of the country was transformed. We with 5G, our enterprise customers, our technology partners, and the global experience of the Vodafone Group for progressively rolling out our 5G networks and services in the coming period. Today, we are greatly honored that our beloved Prime Minister will soon launch the VI 5G use case demonstration. Our unique use case addresses the need for safe working conditions for workers at infrastructure construction sites by leveraging digital infrastructure and 5G. It will demonstrate how a high-speed, ultra-low latency 5G network can be used in India for ensuring worker safety and efficiency in the supervision of critical construction sites. I believe the launch of 5G services marks the beginning of an exciting journey for India. As the ecosystem evolves, we will see limitless potential for 5G development and use cases in the years to come. I thank our Prime Minister for underlining his support to the sector with his presence here today. The telecom industry will certainly play its role in bringing alive his vision for an Atmanirbhar Bharat. Thank you. Thank you, sir, for giving us a sneak peek into the world of 5G with your address, and thank you also for your commitment. And ladies and gentlemen, the India Mobile Congress was conceived in the year 2017, and the first conference was organized in the year 2017. Over the years, it has grown in size and stature, in impact and impression. And in fact, it has truly become a representation of the digital dreams, digital ambitions of 1.4 billion people, earning a very unique place in the global and annual calendar of global conversations on technologies and the digital communications. And today, as we open IMC 2022, we all stand very excited to engage, encapsulate and experience this new digital universe, which is just about to open and ready to engage and explore. So may I request our Honorable Prime Minister to please declare India Mobile Congress 2022 open by launching a film with a click of a remote. माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर IMC 2022 को लॉन्च करें. India, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is rapidly marching ahead on the path of unprecedented development. Technology has contributed significantly to India's growth story.
Digital India has been an enabler in transforming sectors, bringing positive change in the lives of people, providing government services to the last person and empowering the unempowered. India's mighty IT sector is for global good. India's strength lies in developing low-cost, innovative, inclusive and sustainable solutions that further ease of living for people. As India is taking new resolutions in this Amrit Kaal of independence, it is a beginning of a new chapter in this decade of India. Today, we herald a new era of technology, innovation and growth, led by the vision that strives to create a difference in the lives of every citizen of the country. एक नया विश्व तैयार हो रहा है, भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। 5G, a vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is a technology mission. The advent of 5G technologies will be a game changer for the economic and social development of the country. This will revolutionize various building blocks of the nation, including education, agriculture, healthcare, manufacturing and logistics, and add strength to the nation's resolve of building a developed India. The India Mobile Congress, a global platform working towards the vision of creating a new digital universe, promises to be the largest congregation of the industry, intelligentsia and the end consumer. Spread over an area of 26,000 square meters, the event will be a host to over 5,000 CXOs from various companies. There would be over 230 exhibitors and over 100 startups would showcase their tech prowess. The multiple parallel conferences would be attended by over 196 global speakers. An estimated 70,000 visitors would attend this 4-day event, making it one of the most prolific events in its genre. The India Mobile Congress 2022, a global platform for a global vision. And now, ladies and gentlemen, a world of unlimited possibilities and opportunities is just about to begin. Ladies and gentlemen, we have been all eagerly waiting for this moment जब देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G की एक विशेष सौगात मिलने जा रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे रिमोट का बटन दबाकर 5G सर्विसेज का लोकार्पण करें। सभी की तालियों के बीच में यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। India today, ladies and gentlemen, getting this gift of 5G at the hands of Honorable Prime Minister. And from today onwards, the service providers are going to be rolling out the 5G services in different parts of the country, and we're expecting that by the end of 2024, almost 75% of the citizens of this country are going to be able to avail the 5G services. और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G सर्विसेज के लोकार्पण के बाद अब देखते हैं कि किस तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद ज़मीनी स्तर पर काफ़ी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। इसकी तरफ हम अब यहाँ पर कुछ यूज़ केसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जो कि हमारे लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से है। पहला जो यूज़ केस है वो रिलायंस जियो की तरफ से है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, और डेमो स्कूल्स के छात्रों के साथ वर्चुअली हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, और समन्वय के लिए धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक। आप सभी का स्वागत है। और अब कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए और आगे की कार्यवाही के लिए अब हम सीधा जुड़ते हैं मुंबई से, और वहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही लोकप्रिय और मशहूर भारतीय लेखक
अमीश त्रिपाठी जी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ एंड आई हैंड ओवर टू हिम नाउ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रिलायंस के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी, मंत्रीगण, उपस्थित महानुभावों और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हमने 4 स्कूल्स को यहाँ डिजिटली कनेक्ट किया है। एक एक्सपर्ट टीचर जो मुंबई के एक स्कूल में है, बाकी के 3 स्कूल्स के साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। आइए एक वीडियो के जरिए हम एजुकेशन सिस्टम की जरूरतों को समझें। विश्व शक्ति बनने की ताकत रखने वाले भारत को अपनी नई पीढ़ी को सही तरीके से ढालना और संवारना होगा। ये बच्चे जो भविष्य में इस देश के नेता, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, यही हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा ही उनका सबसे जरूरी माध्यम है। भारत में आज 25 करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं, जिनमें से 10 करोड़ क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हैं। एक अच्छी शिक्षा का स्तर तब मिल पाता है जब हमारे विद्यार्थियों के पास क्वालिटी कंटेंट, ट्रेन टीचर्स और कोलैबोरेशन का मौका हो। जियो ट्रू 5G अब इसे संभव करेगा। विश्व स्तर का एजुकेशन कंटेंट आज तक सिर्फ कुछ ही स्कूलों में उपलब्ध था, लेकिन ये कंटेंट सबसे पहले देश भर के सारे शिक्षकों को मिलना चाहिए, जो आगे जाकर इसे अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। इसी के साथ शिक्षकों का आपस में कोलैबोरेशन, टीचिंग कम्युनिटीज का निर्माण, एजुकेशनल कंटेंट का आदान प्रदान और साथ ही को टीचिंग मेथड का उपयोग एक बड़े स्तर पर ट्रेन टीचर्स तैयार कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अलग अलग स्कूल्स के विद्यार्थी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर हो, एक साथ आकर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और अपनी कल्पनाओं को साकार होते देख सकते हैं। जियो ट्रू 5G एक ऐसा अनोखा इकोसिस्टम बनाएगा जो बच्चों के सपनों को पंख देगा और हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत के 247 तक के डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के विजन को भी पूरा करेगा। अब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। स्क्रीन पर चल रही लाइव क्लास के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन की कमी को जियो ट्रू 5G पूरा कर रहा है। और इसमें जब ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जुड़ जाएगी तो शिक्षा की क्वालिटी एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। इसे बासु सर एक उदाहरण से समझाएंगे। ओवर टू यू बासु सर। I will now project my Geo glass on the screen. Our heart is a pump that circulates blood through blood vessels. It is made up of cardiac muscles which beats throughout your life, powered by electrical impulses. The 4 chambers of the heart are called the right and left atrium, which receives the blood, and the right and left ventricle, which pumps the blood. The right and the left chambers are separated by a wall, which you can clearly see here, which is called as the septum. थैंक यू सर। जब देश के 15 लाख स्कूल्स को 5G जोड़ेगा तो बनेगा भारत का एक महान डिजिटल स्कूल और होगा साकार प्रधानमंत्री जी का सपना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी Baramulla district were killed in an encounter. Both the terrorists were linked with Jaish-e-Mohammed. Images of Richa Chadda and Ali Faisal's pre-wedding celebrations from Delhi are out. Remember, the couple is all set to tie the knot on October 4. Ukraine has claimed that a Russian missile attack on Zaporizhzhia has killed at least 25 people in a humanitarian convoy and wounded dozens of others. The convoy of civilian vehicles had assembled in Kyiv on Friday, preparing to leave the area. They were planning to visit relatives and deliver supplies to an area controlled by Russia when it was allegedly hit. Meanwhile, Moscow has annexed 4 partially Russian-occupied regions of Ukraine today. The move was widely expected following annexation votes that ended on Tuesday in the 4 regions. UN Chief Antonio Guterres stated that the annexation has no place in the
लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। थोड़ी देर में खेलने जाने के लिए मन कर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी वालों को बीच बीच में कहना पड़ेगा, ध्यान रखो, सामने देखो, बातें मत करो, ऐसा कहना पड़ेगा ना। हाँ। शाबाश। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? आपको इतनी छोटी आयु में चश्मा आ गया है तो आप जरूर ज्यादा पढ़ती होगी। हाँ सर, मेरा मनपसंद साइंस है। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब मजा आएगा? हाँ। ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे? हाँ। अब ये जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर? नहीं बनता। देखिए, ये फर्क है टेक्नोलॉजी का, जिसका फायदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और बच्चे बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात कर, और हमने देखा कि किस तरह से उनकी भी कितनी आकांक्षाएं हैं, कितने ड्रीम्स हैं। कोई साइंस में इंटरेस्टेड है और उनको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से किस तरह से उनकी एजुकेशन और बहुत एनरिच्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा। तो इसके साथ धन्यवाद करते हैं रिलायंस जियो को, और धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य मंत्रीगण जो हमारे साथ जुड़े थे। बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं अगले यूज़ केस की तरफ। ये यूज़ केस वोडाफोन आइडिया की तरफ से है, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी पर केंद्रित है। देवी सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि नए भारत के निर्माण में हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, पर साथ साथ उनकी सुरक्षा हमेशा से एक चिंता का विषय भी रहा है। और इसी को एड्रेस करते हुए, मद्देनजर रखते हुए, वोडाफोन आइडिया द्वारा डिजिटल ट्विन बनाकर दिल्ली मेट्रो की एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में वर्कर्स की सेफ्टी कैसे इंश्योर की जा रही है, यह अब डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 5G द्वारा इस टनल का टूर भी कर पाएंगे और साथ साथ वर्कर्स से संवाद भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी तरफ देखते हैं एक फिल्म। भारत का विकास आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस विकास को मजबूती देते हैं हमारे मेहनती वर्कर्स, जो दिन रात एक करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति और डिजिटल इंडिया योजना भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दे रहे हैं। हमारे इन मेहनती भाई बहनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। Earlier in his home state, he flagged off Vande Bharat Express. The train will be connecting the state capitals of Gujarat and Maharashtra and will run 6 days a week. On his 2-day visit to Gujarat, he also inaugurated phase 1 of the Ahmedabad Metro Rail project. देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi's convoy stopped for a brief minute to give way to an ambulance while he was travelling from Ahmedabad to Gandhinagar. This happened when he was on his way to the Raj Bhavan in Gandhinagar after finishing his public rally on Friday afternoon.
Bulldozers rolled out in Noida's Grand Amax society over encroachments into common spaces by several apartment owners. This is the same society where a spat between Shrikant Tyagi and another resident over the same issue had triggered a major row last month. Madras High Court has directed Stalin government to grant permission to the RSS to organize a march on November 6. The High Court has also made it clear that authorities will face contempt action if they violate this order. The Tamil Nadu government had earlier denied permission to the RSS for holding a march on October 2, citing law and order issues. Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra entered Karnataka today. The 21-day Karnataka leg will cover 7 districts and 511 kilometers before entering Telangana. A major terror bid was foiled by the armed forces in Jammu and Kashmir. Terrorists who came to disrupt the ongoing Agniveer Army rally in Baramulla district were killed in an encounter. Both the terrorists were linked with Jaish-e-Mohammed. Images of Richa Chadda and Ali Faisal's pre-wedding celebrations from Delhi are out. Remember, the couple is all set to tie the knot on October 4. Ukraine has claimed that a Russian missile attack on Zaporizhzhia has killed at least 25 people in a humanitarian convoy and wounded dozens of others. The convoy of civilian vehicles had assembled in Kyiv on Friday, preparing to leave the area. They were planning to visit relatives and deliver supplies to an area controlled by Russia when it was allegedly hit. Meanwhile, Moscow has annexed 4 partially Russian-occupied regions of Ukraine today. The move was widely expected following annexation votes that ended on Tuesday in the 4 regions. UN Chief Antonio Guterres stated that the annexation has no place in the modern world, but this follows Russia's pattern of hostile takeovers. Remember, the same thing happened in Crimea in 2014. An explosion at an education institute in Kabul killed over 19 and injured over 30. A witness claimed that a suicide attacker detonated explosives at the center. There were no immediate claims of responsibility for the attack. Prime Minister Narendra Modi also inaugurated a slew of projects earlier in his home state. He flagged off Vande Bharat Express. The train will be connecting the state capitals of Gujarat and Maharashtra and will run 6 days a week. On his 2-day visit to Gujarat, he also inaugurated phase 1 of the Ahmedabad Metro Rail project. देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ-साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi's convoy stopped for a brief minute to give way to an ambulance while he was travelling from Ahmedabad to Gandhinagar. This happened when he was on his way to the Raj Bhavan in Gandhinagar after finishing his public rally on Friday afternoon. Bulldozers rolled out in Noida's Grand Amax society over encroachments into common spaces by several apartment owners. This is the same society where a spat between Shrikant Tyagi and another resident over the same issue had triggered a major row last month. Madras High Court has directed Stalin government to grant permission to the RSS to organize a march on November 6. The High Court has also made it clear that authorities will face contempt action if they violate this order. The Tamil Nadu government had earlier denied permission to the RSS for holding a march on October 2, citing law and order issues. Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra entered Karnataka today. The 21-day Karnataka leg will cover 7 districts and हम टनल के अंदर उपस्थित लोगों से वार्तालाप करेंगे। इस समय टनल के अंदर उपस्थित हैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और डीएमआरसी टनल के निर्माण में लगे कुछ कर्मचारी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप V5G पे इनसे बातचीत करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। सक्सेना जी, आप टनल पे पहुंच गए हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त मेट्रो की टनल में मौजूद हूं और यहाँ पर उसका कार्य चल रहा है।
वहाँ कोई मजदूर भाई बहन है तो उनसे बात करेंगे, कुछ विशेष बता सकते हैं कोई? जी हाँ, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और मैं यहाँ पर रिंकू कुमार जी को बुला रहा हूँ जो आपसे संवाद करेंगे। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये टनल के काम में ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसे काम आ रही है? सर बहुत ही उन्नति के लिए काम आएगी सर, बहुत ही मेहनती है सर, हमें हर तरह के निर्देश दे करके बताया जा रहा है सर। ये सीखने में तकलीफ होती है कि आराम से आप लोग उसको सहज स्वभाव के तहत करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ट्रेनिंग लगती है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से समझ आता है, क्या होता है? नहीं सर, बहुत ही आसान तरीके से हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, संकेत दिया जाता है सर। हम अपना कार्य आराम से इस अनुसार इस तकनीक से बढ़िया से कर सकते हैं सर। हमें कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं है सर यहाँ पे। इसके कारण काम में गति बढ़ती है? जी बिल्कुल, काम में तेजी होती है सर। हम अपने काम पे ही ध्यान रखते हैं पूरा। सबसे बड़ी बात होती है मजदूर का विश्वास, उसको लगना चाहिए कि यहाँ सेफ्टी है, और मुझे पहले से इंडिकेशन मिलता है इस टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये अनुभव आ रहा है। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से। अंदर कोई गैसेस हो, कुछ और तकलीफ हो तो तुरंत ये सेंस करके बता देता है, तो ये अनुभव आ रहा है कुछ आपको? जी सर बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप श्रमिकों के कारण मेरा देश बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इमर्सिव हो सकती है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस, और हमने देखा कि किस तरह से बच्चे कह रहे थे कि हमें बहुत मज़ा आ रहा था, जो कुछ वो किताबों में पढ़ रहे थे उसे अब वो देख पा रहे थे, और देखने पर एक कॉम्प्रिहेंड ज़्यादा अच्छी तरह से कर पा रहे थे, अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे थे। ये बदलाव आएगा शिक्षा के क्षेत्र में। और आगे बढ़ते हुए अब हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं वाराणसी से स्कूल के कुछ छात्र, शिक्षक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और दिव्य सज्जनों, इस मंच पर अब एक जादू, एक मैजिक होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ इसी डेमो स्कूल की एक छात्रा खुशी होलोग्राम के रूप में, यानी कि एक 3D इमेज के रूप में यहाँ पर साक्षात आने वाली हैं, और फिर वे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करेंगी, बातें करेंगी। होलोग्राम मेरे पीछे की तरफ साइड में स्क्रीन पर आएगा, आप सबको स्क्रीन पर वहाँ पर देख पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वह अपने पोडियम पर जाकर इस यूज़ केस को देखें। मैं रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू काइंडली grace the podium to witness this use case. और हमारे साथ मेरे पीछे यहाँ पर होलोग्राम में जी नमस्ते। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही VR में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जैसे ही हम पीछे तके तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था। यह सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। इसके बाद हमने पिरामिड देखा। हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि पिरामिड कैसा दिखता है, हमने किताबों में ही पढ़ा था, पर जैसे हमने VR के थ्रू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अब जितना आपने सीखा है, कभी जिन बच्चों ने इसे देखा नहीं है
और आपको बताया जाए कि आज आपको 15 मिनट दे रहे हैं, आप बाकी बच्चों को आज पढ़ाओ, आप टीचर बन जाओ, जो आपने देखा है उसको आप उस ढंग से समझा सकती हो। हाँ सर। आपको विश्वास है कि बच्चे, बाकी जो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, वे इस बात को समझ लेंगे भाई ये कि इसको तो इतना सारा आता है, इतना सारा सीख लिया है? हाँ ऐसा आप उनको विश्वास दिला सकती हो? हाँ सर। और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तुम्हें क्या विचार आता है ये सब देखने के बाद, करने के बाद तुम्हें क्या विचार आता है? हम जो किताबों में पढ़े हैं उन्हें असली में अनुभव कर पाए, वो भी अपने ही स्कूल में। इससे पढ़ाई में हमारी रुचि और बढ़ गई है और हमें नई नई चीजें सीखने का मन है, जैसे कि डायनासोर, आदि मानव पहले कैसे रहते थे, और साथ अजूबे भी देखने हमें इसमें। तो अब क्या करोगे? टेक्नोलॉजी में ही रुके रहोगे कि कभी खेलकूद भी करोगे? नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। वरना क्या होता है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा नशा है, मैं इन लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा हूं वरना खेल कूद छूट जाएगा, मम्मी पापा से बातचीत छूट जाएगी, दोस्तों से बातचीत छूट जाएगी। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा ना? नो सर। क्योंकि इसमें इतनी दुनिया, जैसे रील देखते हैं ना आप लोग, फिर उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं और माँ को लगता है कि ये तो 5G पर पढ़ रही होगी चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे सभी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करने का भी और उनको उत्साहित करने का, प्रेरित करने का एक होलिस्टिक विकास की तरफ, ना केवल टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें पर खेल कूद भी पूरा बैलेंस करके रखें। And now, ladies and gentlemen, we are all very eagerly waiting to be led and guided by the most transformative and progressive leader this nation has seen. We are waiting for the address of the Honorable Prime Minister. Please join me, ladies and gentlemen, as I request Prime Minister Sir for his inaugural address. इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए
बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए
जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा, बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। हमने भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप पीएलआई स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। इतना ही नहीं, जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को भेज रहे हैं। जरा सोचिए, 2014 में 0 मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया, वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे, इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें, तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें, तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है। ये बात भी नोट करने वाली है कि आज शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और उसकी एक खास वजह है, 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है।
अब कहां 100 और कहां 1,70,000। जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया, जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया, जैसे हमने करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे, करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे, आजादी के इतने साल के बाद जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया। वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। साथियों, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही डेटा की कीमत भी उतनी अहम हो जाती है। ये डिजिटल इंडिया का तीसरा पिलर था जिस पर हमने पूरी शक्ति से काम किया। हमने टेलीकॉम सेक्टर के रास्ते में आने वाली तमाम अड़चनों को हटाया। पहले विजन की कमी और पारदर्शिता के अभाव में टेलीकॉम सेक्टर को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आप परिचित हैं कि कैसे हमने 4G तकनीक के विस्तार के लिए पॉलिसी सपोर्ट दिया। इससे डेटा की कीमत में भारी कमी आई और देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ। देखते ही देखते ये तीनों फैक्टर, डिवाइस की कीमत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर तरफ नजर आने लगा। लेकिन साथियों, इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग, सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। और मैं एक छोटा अनुभव बताता हूं। शायद ये 2007-8 का कालखंड होगा या 9-10 का, मुझे याद नहीं है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां मैं कभी गया नहीं था और बहुत ही ट्राइबल इलाके में, बहुत ही पिछड़ा। मैं, हमारे सरकार के अधिकारियों ने भी मुझे एक बार वहां कार्यक्रम करना ही करना है, मुझे जाना है। तो वो इलाका ऐसा था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट की संभावना नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड थी, कोई संभावना हो रही थी। तो आखिर में एक चिलिंग सेंटर, दूध का चिलिंग सेंटर, वो भी 25 लाख रुपए का। मैंने कहा भले वो 25 लाख का होगा, 25,000 का होगा, मैं खुद उद्घाटन करूंगा। अब लोगों को लगता है ना, चीफ मिनिस्टर को इससे नीचे तो करना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं उस गांव में गया। अच्छा, वहां में एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वहां से 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल का छोटा सा मैदान था, वहां पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। लेकिन जब वो चिलिंग सेंटर पे गया मैं, तो आदिवासी माताएं बहनें दूध भरने के लिए कतार में खड़ी थी। तो दूध का अपना बर्तन नीचे रख करके जब हम लोग गए और उसकी उद्घाटन की विधि कर रहे थे, तो मोबाइल से फोटो ले रही थी। मैं हैरान था, इतने दूर दरार के क्षेत्र में मोबाइल से फोटो ले रही है। तो मैं उनके पास गया,
मैंने कहा ये फोटो लेके क्या करोगी? तो बोली डाउनलोड करेंगे। ये शब्द सुनकर के मैं सचमुच में सरप्राइज हुआ था मुझे कि ये ताकत है हमारे देश के गांव में। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताएं बहनें जो दूध भरने आई थी, वो मोबाइल फोन से अपनी फोटो ले रही थी और उनको ये मालूम था कि इसमें तो नहीं, आप डाउनलोड करवा देंगे। और डाउनलोड शब्द उनसे मुंह से निकलना, ये उनकी समझ शक्ति और नई चीजों को स्वीकारने के स्वभाव का परिचय देती है। मैं कल गुजरात में था, तो मैं अंबाजी तीर्थ क्षेत्र पे जा रहा था, तो रास्ते में छोटे छोटे गांव थे। आधे से अधिक लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल से वीडियो उतार रहे थे, आधे से अधिक लोग। यानी हमारे देश की ये जो ताकत है, इस ताकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ देश के इलीट क्लास के कुछ लोगों को ही हमारे गरीब भाई बहनों पर यकीन नहीं था। आखिरकार हम डिजिटल फर्स्ट के अप्रोच के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हुए। सरकार ने खुद आगे बढ़कर डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता आसान बनाया। सरकार ने खुद ऐप के जरिए सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सर्विस को बढ़ावा दिया। बात चाहे किसानों की हो या छोटे दुकानदारों की, हमने उन्हें ऐप के जरिए रोज की जरूरतें पूरी करने का रास्ता दिया। इसका नतीजा आज आप देख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी सही मायने में डेमोक्रेटिक हो गई है, लोकतांत्रिक हो गई है। आपने भी देखा है कि डिजिटल फर्स्ट की हमारी अप्रोच ने कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में देश के लोगों की कितनी मदद की। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था, लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपए मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अस्पतालों के सामने असाधारण चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए भी कर रहे थे। ऑफिसेज बंद थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। मैंने तो बीच में एक वीडियो देखा, कोई भिक्षुक भी डिजिटली पेमेंट लेता है। ट्रांसपेरेंसी देखिए। ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है, वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। भारत
आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। आज इतना ही डेटा 125 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बनी हुई है। ये बात अलग है, 4,000 रुपया बचना कोई छोटी बात नहीं है हर महीना। लेकिन जब मैं बता रहा हूं तब आपको ध्यान में आया, क्योंकि हमने इसका हो हल्ला नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिए, झूठे झूठे बड़े गपगोले नहीं चलाए। हमने फोकस किया कि देश के लोगों की सहूलियत बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत न सिर्फ चौथी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाएगा, बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। और विद्वान लोग तो कहने लगे हैं कि ये भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। ये डेकेड नहीं, सेंचुरी है। भारत ने किस तरह 4G आने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऊंचाई छलांग लगाई है, इसके हम सभी साक्षी हैं। भारत के नागरिकों को जब टेक्नोलॉजी के समान अवसर मिल जाते हैं, तो दुनिया में उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता। इसलिए आज जब भारत में 5G का लॉन्च हो रहा है, तो मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं दोस्तों। मैं दूर का देख पा रहा हूं, और जो सपने हमारे दिल दिमाग में चल रहे हैं, उसको अपनी आंखों के सामने हम साकार होते देखेंगे। हमारे बाद वाली पीढ़ी देखेगी, ऐसा काम होने वाला नहीं है, हम ही हमारे आंखों के सामने देखने वाले। ये एक सुखद संयोग है कि कुछ सप्ताह पहले ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और इसलिए ये अवसर है हमारे युवाओं के लिए, जो 5G टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर का ध्यान खींचने वाले इनोवेशंस कर सकते हैं। ये अवसर है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना विस्तार कर सकते हैं। ये अवसर है भारत के सामान्य मानवी के लिए, जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किल्स को सुधार सकता है, अपस्किल्स कर सकता है, रीस्किल्स कर सकता है, अपने आइडियाज को सच्चाई में बदल सकता है।
साथियों, आज का यह ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें। साथियों, इन सवालों में हर भारतीय के लिए एक अवसर है, एक चुनौती है, एक सपना है और एक संकल्प भी है। मुझे पता है कि आज 5G की इस लॉन्चिंग को जो वर्ग सबसे ज्यादा उत्साह से देख रहा है वो मेरा युवा साथी है, मेरे देश की युवा पीढ़ी है। हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी कितने ही बड़े अवसर इंतजार कर रहे हैं। रोजगार के कितने ही नए अवसर बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारी इंडस्ट्री, हमारे इंस्टीट्यूट्स और हमारे युवा मिलकर इस दिशा में निरंतर काम करेंगे। और अभी जब मैं काफी समय पूरा जो एग्जीबिशन लगा है उसको समझने का प्रयास करता था। मैं कोई टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा था। ये देख करके मुझे लगा है कि मैं सरकार में तो सूचना करने वाला हूं कि हमारी सरकार के सभी विभाग, उसके सारे अधिकारी जरा देखें कहां कहां इसका उपयोग हो सकता है, ताकि सरकार की नीतियों में भी इसका असर नजर आना चाहिए। मैं देश के स्टूडेंट्स को भी चाहूंगा कि 5 दिन तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है। मैं खास करके टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप आइए, इसे देखिए, समझिए और कैसे दुनिया बदल रही है। और आप एक बार देखेंगे तो अनेक चीजें नई आपके भी ध्यान में आएगी, आप उसमें जोड़ सकते हैं। और मैं इस टेलीकॉम सेक्टर के लोगों से भी कहना चाहूंगा, मुझे खुशी होती थी जिस स्टॉल में मैं गया, हर कोई कहता था ये इंडिजीनियस है, ये आत्मनिर्भर है, ये हमने बनाया है। सब बड़े गर्व से कहते थे, मुझे आनंद हुआ। लेकिन मेरा दिमाग कुछ और चल रहा था। मैं ये सोच रहा था, जैसे कई प्रकार की कार आती हैं, हर एक की अपनी एक ब्रांड होती है, हर एक की अपनी विशेषता भी होती है, लेकिन उसमें जो स्पेयर पार्ट पहुंचाने वाले होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर के होते हैं। और एक ही एमएसएमई के एक फैक्ट्री वाला 6 प्रकार की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाता है, छोटे मोटे जो भी सुधार करने करे वो देता है। मैं चाहता हूं कि आज हार्डवेयर भी आप लगाए रहे हैं, ऐसा लगा मुझे आपकी बातों से। क्या एमएसएमई सेक्टर को इसके लिए जो हार्डवेयर की जरूरत है उसके छोटे छोटे पुर्जे बनाने के लिए उनको काम दिया जाए, बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाया जाए। एकदम से मैं व्यापारी तो नहीं हूं, मुझे रुपये पैसे से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। हमारे एमएसएमई सेक्टर की ये ताकत है। और वो सप्लाई आपको सिर्फ अपने यूनिकनेस के साथ उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह जोड़ करके सर्विस देनी है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आप सब मिलकर के एक नया और मिलकर के करना पड़ेगा, और तभी जाकर के इसकी कॉस्ट हम नीचे ला सकते हैं। बहुत से काम हैं, हम मिलकर के करते ही हैं। तो मैं जरूर इस क्षेत्र के लोगों से भी कहूंगा। मैंने ये भी देखा है कि स्टार्टअप में जिन बच्चों ने काम किया है, जिन नौजवानों ने काम किया है, ज्यादातर इस क्षेत्र में उन्हीं स्टार्टअप को ओन कर करके उसको स्केल अप किया गया है। मैं स्टार्टअप वाले साथियों को भी कहता हूं कि आपके लिए भी इस क्षेत्र में कितनी सेवाएं अधिकतम आप दे सकते हैं, कितनी यूजर फ्रेंडली व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं, आखिरकार इसका फायदा यही है। लेकिन एक और चीज मैं चाहूंगा, ये भी आपका जो एसोसिएशन है
वो मिलकर के एक मूवमेंट चला सकता है क्या? एटलीस्ट हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये 5G जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है, उसके लोगों को एजुकेट करने वाले एग्जीबिशन, उसकी व्यवस्था हो सकती है क्या? मेरा अनुभव है, छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हमारे देश में 24 घंटे बिजली, ये सपना था। मैं गुजरात में जब था तो मैंने एक योजना बनाई, ज्योति ग्राम योजना, और मेरा सपना था कि मैं गुजरात के हर घर में 24/7 बिजली दूंगा। अब मेरे सारे अफसर कहते थे साहब संभव ही नहीं है, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी सॉल्यूशन दिया था। मैंने कहा हम एग्रीकल्चर फीडर अलग कर दें, डोमेस्टिक फीडर अलग कर दें, और फिर उस काम को किया और एक एक जिले को पकड़ करके काम पूरा करता था। बाकी जगह पे चलता था लेकिन एक काम पूरा करो। फिर उस जिले का बड़ा समिट करता था, 2.5-3 लाख लोग आते थे, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलना एक बड़ा आनंद उत्सव का समय था। वो 2003, 4, 5 का कालखंड था। लेकिन उसमें मैंने देखा, मैंने देश भर में बिजली से होने वाले काम, बिजली से चलने वाले यंत्र, उनकी एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई। जब लोगों को क्या लगता है, बिजली आई है ना, रात को खाना खाने का समय बिजली मिलेगी, बिजली आई मतलब टीवी देखने के लिए काम आ जाएगा। इसका कई प्रकार से उपयोग हो सकता है, उसका एजुकेशन भी जरूरी था। मैं ये 2003-5 के बीच की बात कर रहा हूं। और जब वो सारा एग्जीबिशन लगाया तो लोग, टेलर भी सोचने लगा मैं मेरा इक्विपमेंट ऐसे लगूंगा, कुम्हार भी सोचने लगा कि मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल लूंगा, माताएं बहनें भी लगी किचन में हमारे इलेक्ट्रिक वाले इतनी चीजें आ सकती हैं। यानी एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ। और बिजली का मल्टीपल यूटिलिटी जीवन के सामान्य जीवन में 5G भी उतना जल्दी, लोगों को लगेगा हाँ यार अब तो वीडियो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है, रील देखना है तो बहुत इंतजार नहीं करता है, फोन कट नहीं होता है, साफ सुथरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, फोन कॉल हो सकता है। इतने से सीमित नहीं है, ये जीवन को बदलने वाली व्यवस्था के रूप में आ रहा है। और इसलिए मैं इस उद्योग जगत के मित्रों के एसोसिएशन को कहूंगा कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इसके कितने पहलू हैं, और आप देखिए वो लोग उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो एक आपके लिए सेवा का काम भी हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी जीवन में सिर्फ बातचीत करने के लिए या कुछ वीडियो देखने के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये पूरी तरह एक क्रांति लाने के लिए उपयोग होना चाहिए। और हमें 130 करोड़ देशवासियों तक एक बार पहुंचना है, बाद में तो वो पहुंचा देगा, आप देख लीजिए, आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने ड्रोन पॉलिसी अभी लाया था। आज कई खेतों में मैं देख रहा हूं वो ड्रोन से अपना दवाइयां छिड़काव का काम शुरू कर दिया, उन्होंने ड्रोन चलाना सीख दिया। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इन व्यवस्थाओं की तरफ जाना चाहिए। और साथियों, आने वाले समय में देश निरंतर ऐसी टेक्नोलॉजीज का नेतृत्व करेगा जो भारत में जन्मेगी, जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर सभी देशवासियों को शक्ति उपासना के पावन पर्व पर शक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम 5G लॉन्च होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके संदेश, आपके विचारों ने हमेशा से सभी में एक नई ऊर्जा दी है, सपने देखने की, सपनों को साकार करने की एक हिम्मत दी है, कुछ कर गुजरने की एक हौसला दिया है, नामुमकिन को मुमकिन करने की एक जिद दी है, गति दी है। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर एक Agniveer Army rally in Baramulla district were killed in an encounter. Both the terrorists were linked with Jaish-e-Mohammed.
Images of Richa Chadda and Ali Faisal's pre-wedding celebrations from Delhi are out. Remember, the couple is all set to tie the knot on October 4. Ukraine has claimed that a Russian missile attack on Zaporizhzhia has killed at least 25 people in a humanitarian convoy and wounded dozens of others. The convoy of civilian vehicles had assembled in Kyiv on Friday, preparing to leave the area. They were planning to visit relatives and deliver supplies to an area controlled by Russia when it was allegedly hit. Meanwhile, Moscow has annexed 4 partially Russian-occupied regions of Ukraine today. The move was widely expected following annexation votes that ended on Tuesday in the 4 regions. UN Chief Antonio Guterres stated that the annexation has no place in the modern world, but this follows Russia's pattern of hostile takeovers. Remember, the same thing happened in Crimea in 2014. An explosion at an education institute in Kabul killed over 19 and injured over 30. A witness claimed that a suicide attacker detonated explosives at the center. There were no immediate claims of responsibility for the attack. Prime Minister Narendra Modi also inaugurated a slew of projects earlier in his home state. He flagged off Vande Bharat Express. The train will be connecting the state capitals of Gujarat and Maharashtra and will run 6 days a week. On his 2-day visit to Gujarat, he also inaugurated phase 1 of the Ahmedabad Metro Rail project. देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ-साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi's convoy stopped for a brief minute to give way to an ambulance while he was travelling from Ahmedabad to Gandhinagar. This happened when he was on his way to the Raj Bhavan in Gandhinagar after finishing his public rally on Friday afternoon. Bulldozers rolled out in Noida's Grand Max Society over encroachments into common spaces by several apartment owners. This is the same society where a spat between Shrikant Tyagi and another resident over the same issue had triggered a major row last month. Madras High Court has directed Stalin government to grant permission to the RSS to organize a march on November 6. The High Court has also made it clear that authorities will face contempt action if they violate this order. The Tamil Nadu government had earlier denied permission to the RSS for holding a march on October 2, citing law and order issues. Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra entered Karnataka today. The 21-day Karnataka leg will cover 7 districts and 511 kilometers before entering Telangana. A major terror bid was foiled by the armed forces in Jammu and Kashmir. Terrorists who came to disrupt the ongoing Agniveer Army rally in Baramulla district were killed in an encounter. Both the terrorists were linked with Jaish-e-Mohammed. Images of Richa Chadda and Ali Faisal's pre-wedding celebrations from Delhi are out. Remember, the couple is all set to tie the knot on October 4. Ukraine has claimed that a Russian missile attack on Zaporizhzhia has killed at least 25 people in a humanitarian convoy and wounded dozens of others. The convoy of civilian vehicles had assembled in Kyiv on Friday, preparing to leave the area. They were planning to visit relatives and deliver supplies to an area controlled by Russia when it was allegedly hit. Meanwhile, Moscow has annexed 4 partially Russian-occupied regions of Ukraine today. The move was widely expected following annexation votes that ended on Tuesday in the 4 regions. UN Chief Antonio Guterres stated that the annexation has no place in the modern world, but this follows Russia's pattern of hostile takeovers. Remember, the same thing happened in Crimea in 2014. An explosion at an education institute in Kabul killed over 19 and injured over 30. A witness claimed that a suicide attacker detonated explosives at the center. There were no immediate claims of responsibility for the attack. Prime Minister Narendra Modi also inaugurated a slew of projects earlier in his home state. He flagged off Vande Bharat Express. The train will be connecting the state capitals of Gujarat and Maharashtra and will run 6 days a week.
On his two-day visit to Gujarat, he also inaugurated phase 1 of the Ahmedabad Metro Rail project. देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। According to sources ahead of the Congress chief poll results, Mallikarjun Kharge has given his resignation to Sonia Gandhi as leader of opposition of Rajya Sabha. On Friday, Kharge filed his nomination for the Congress presidential poll. So this is the latest coming in rule with a one-man, one-post policy. Now Mallikarjun Kharge has resigned as the leader of opposition of the Rajya Sabha. So we know that the Congress presidential polls are currently underway and it is looking like a contest between Shashi Tharoor and Mallikarjun Kharge. And following which, now the big question remains, who is going to be succeeding Mallikarjun Kharge as leader of the opposition of Rajya Sabha. If it is going to be somebody from the Hindi heartland, it could be somebody like Digvijay Singh, who has bowed out of the Congress presidential race. On the other hand, if they do decide to go with a South Indian face, then P. Chidambaram also stands a strong chance. Going across to my colleague Pallavi Ghosh, who joins us on the phone line with all the inside details. Good afternoon, Pallavi. The big news this hour, Mallikarjun Kharge has resigned from the leader of opposition of Rajya Sabha. So what next? Who can we expect to succeed him in that seat? For the reason he resigned is also because of the Udaipur resolution, and that is of the one-man, one-post. So he cannot be both the LOP and the president of the party. So he sends in his resignation to Sonia Gandhi. And in Rajya Sabha, well, there are two main names which are doing the rounds. One, of course, is of Mr. Chidambaram, and the second, of course, is Digvijay Singh. They'll need someone who is articulate, someone who can have a connection with other political parties, negotiate with the government as well, and also someone who will seem to be senior and bilingual. So in that sense, it could be a tough choice for them. I mean, Kharge was chosen after Ghulam Nabi Azad's term ended. So that's something which they are going to be chalking out and working out. But as of now, the front runner remains Digvijay Singh. Pallavi, what will be their main concerns? Will they be trying to recapture the Hindi heartland where they've lost quite a bit of footing? See, I mean, I would say Chidambaram becomes it gets almost ruled out because you cannot have both a president as well as an LOP from the same region. The LOP's job is very, very important because that's the person where you put forward your point of view, who negotiates not with the government but also with other opposition political parties. If you look at the comparison between the two houses, at least in Rajya Sabha, the opposition has the numbers, though the NDA is also catching up, the BJP is catching up. And that's where the Congress wants to feel its presence and put its foot forward, whether it's on issues, whether it's on policies, whether it's on laws as well. I think that's going to be those calculations which they'll need to be keeping in mind, and also someone with whom the other political parties will even want to do business. Therefore, the stature becomes very important. Thank you very much for providing that perspective, Pallavi. Some shocking news coming in from Rajasthan currently. This time, a 17-year-old girl was repeatedly gang raped by 8 men in Rajasthan's Bhiwadi town in December last year and forced to pay 50,000 rupees for the video of the sexual assault. The accused then tried to blackmail her into paying 2.5 lakh rupees and released the video clip when she couldn't pay. The victim did not tell her family about the sexual assault. Her father filed the complaint on Thursday after he came across this video clip of his daughter's gang rape. के व्यक्ति ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17.5 साल की बहन के साथ गांव के ही 8 लड़कों ने बलात्कार किया है। इस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्रीमान सीओ साहब किस्मवास के सपोर्ट की गई है। तफ्तीश जारी है। पीड़िता का मेडिकल करा लिया है, बयान हो गए हैं। सीओ साहब द्वारा घटनास्थल
आरोपियों की दस्तयाबी के लिए टीम गठित हो रखी है जो उनको शीघ्र दस्तयाब कर जैसी भी स्थिति होगी ट्रांस से अमल में लाएगी। So this is the unimaginable horror that is coming in from Rajasthan, that 8 men have repeatedly gang raped the minor girl and have released the video of the assault. We know that previously such cases of sexual assault have been emerging from the state of Rajasthan, and it remains a big case of concern, especially with the aftermath of these incidents, with how they're being handled, and allegations coming in from the victim's family that the police action that is taken is possibly inaction which is taking place. जब पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी, क्या बोलना चाहेंगे? राजस्थान से जो शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें कि 8 लोगों ने मिलकर एक छोटी बच्ची का बलात्कार किया, उसे ब्लैकमेल किया और उसकी वीडियो फिर जब पैसे नहीं मिले तब उसको रिलीज़ कर दिया। ये दिखाता है कि आज राजस्थान की महिलाएं ये नहीं कह रही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कह रही है लड़की हूँ तो क्या बच सकती हूँ। आज राजस्थान नंबर 1 हो चुका है बलात्कार के मामलों में, और इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं चाहे अलवर से हो चाहे यहाँ से हो, जब सामने आती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये ज़्यादातर मामले फेक होते हैं। राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता सत्ता बचाओ है, ना कि बेटी बचाओ, इसीलिए आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। उनके मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है तो बलात्कार होना लाजमी है, केसेस फेक है। खुद के एमएलएज और विधायक और मंत्री है कई सारे राजस्थान कांग्रेस के जो उनके बेटे ऐसे बलात्कार में लिप्त हैं, परंतु प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जो इस विषय पर पूरे देश में भ्रमण करते हैं, वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं, वो आज इस विषय पर चुप क्यों हैं? वो इसलिए चुप है क्योंकि इस पर केवल वो शुद्ध राजनीति करते हैं। आज सवाल उनसे बनता है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सख्त कार्रवाई भी नहीं की जाएगी अपराधियों पर? क्या महिला उत्पीड़न के मामलों के ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मौन रखेंगे क्योंकि राजस्थान में उनकी सरकार है, या वो इस पीड़िता के साथ खड़े होने जाएंगे और अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी है उन पर कोई कार्रवाई भी करेंगे? क्योंकि अशोक गहलोत जी की सरकार जब से वहां पर आई है उनकी एक ही प्राथमिकता है, सत्ता बचाओ, अपराधी बचाओ, दंगाई बचाओ, और कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से चरमरा चुकी है। Joined by my colleague on the phone line. A very good afternoon to you, भवानी जी। ये जो जांच चल रही है, अब FIR थर्सडे को फाइल किया गया है और उसके बाद जो जांच हो रही है उसमें क्या सामने आया है अब तक? देखिए, अब जो सबसे बड़ा पुलिस के सामने चुनौती है वो आरोपियों को अरेस्ट करना। अभी तक की जो FIR है उसके मुताबिक ये 31 अक्टूबर 2021 की घटना है, तकरीबन 9 महीने पहले की घटना है। और उसके बाद में उसके साथ जो विक्टिम है उसके साथ रिपीटेड गैंगरेप हुआ, उसको ब्लैकमेल किया गया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, फिर पैसा मांगा और नहीं मिले तो उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया। तो ये अपना आप पे इतना सब कुछ होता रहा और पुलिस को खबर तक नहीं। और अब जब FIR दर्ज हो गई तब आरोपी फरार है, 8 आरोपी है, एक भी नहीं है, अभी एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। तो इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि आरोपी अरेस्ट कब होंगे। ये जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर ऐसी भी पहले कई ऐसे मामले आ चुके हैं सामने जहां पर इस तरीके के जो गैंग्स हैं वो कई जगह काम करते हैं अपराधियों के। जो एक थानागाजी का केस आया जिसमें रास्ते में रोककर एक महिला के साथ गैंगरेप कर दिया। तो पुलिस का जो खौफ है वो खत्म हो गया। और क्योंकि जब किसी मामले में अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा और वो विजिबल एक्शन नहीं होगा तब तक ये जो मुश्किलें हैं एक के बाद एक मामले आ रहे राजस्थान में, वो राजस्थान की कानून व्यवस्था के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। जी, Thank you very much for those details, Vani ji. Stay with us because we have some breaking news coming in. Now, the BJP attacks the Gehlot government. Amit Malviya says the girls of Rajasthan are paying the brunt of the appeasement of the Congress government. Some people are not naming the criminals so that secularism is not put in danger. In the midst of all this, it is a priority of Ashok Gehlot to save his power and make the Gandhi family chakri.
So this is the latest coming in from Amit Malviya, spokesperson of the BJP. We also have IT head of the BJP, and Shehzad Poonawalla had earlier commented on it as well, and we played that bite out for you. Back to my colleague Bhavani to give us more perspective on this. Bhavani ji, वो जो statements अशोक गहलोत ने किए थे रेप के बारे में, लगातार उन्होंने इनसेंसिटिव कमेंट्स किए हैं रेप के बारे में. अभी भी सितंबर में उन्होंने बोला है कि ज़्यादातर वो जो केसेस हैं वो 56% फेक हैं, और उसके बाद अब बीजेपी बोल रही है कि गहलोत गवर्नमेंट वो जो जांच में जो नाम बाहर आए हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रही है. क्या पुलिस ने नाम रिलीज़ किए हैं आरोपियों के? We'll try to re-establish that connection, but to bring our viewers up to speed, a minor was raped on camera last year, and following which she was blackmailed. After that, that video was released. Her father saw that video, took cognizance of it and filed an FIR immediately. And now the big question is, when will the accused be arrested? Because reports are suggesting that the accused, about 8 of them, live very close to the victim's residence, and that they haven't been arrested yet. And that is a big question emerging. Why haven't they been arrested yet? Why is their identity being protected, and why is there so much inaction by the police? Earlier this month, when the NCRB had released statistics that Rajasthan records the highest number of rapes, Chief Minister Ashok Gehlot had hit back, saying that 56% of these cases are in fact false. And he had said that especially in cases where there is an FIR filed and the police investigation results in swift arrest. Following that statement, the fact that there aren't any arrests that have been made in this case proves to be a big question, and the BJP not sparing any chance there to hit out at the Congress government to say that this is appeasement politics being played out by the government. Okay, now some news coming in from Pakistan. So let's go across to that. Now the Twitter account of the government of Pakistan has been withheld in India, which means that if you try to access their Twitter account, it tells you that it has been withheld in response to a legal notice. That's what you will be seeing on your social media. Now I'm going across to my colleague Abhishek Jha, who brings us more details on this. Abhishek, what was the primary reason that was given for the withholding of this account? So this account was earlier withheld in July after India raised this issue with Twitter, because those Twitter accounts were trying to create misinformation and spreading anti-India sentiment. So those accounts were withheld in India, especially of government of Pakistan. And recently this account has been was reactivated, but now after the request from the government, it seems like that account has been withheld in India once again. Earlier also, government has banned or blocked several YouTube channel or Facebook pages or several other social media accounts in the name of spreading false propaganda and misinformation and fomenting anti-India sentiment. And now when Pakistan's government Twitter handle has been withheld, it tells how this whole anti-India propaganda is created with Pakistan's state-backed agencies. Previously, the INB ministry had blocked 16 YouTube news channels, including 6 Pakistan-based channels, for spreading disinformation related to India's national security, foreign relations and public order. Abhishek, now it's very important that Twitter has responded, saying if it receives a valid and properly scoped request from an authorized entity, it may be necessary to withhold access to certain content in a particular country from time to time. So the fact that it has been withheld, the government of Pakistan's Twitter handle, does this mean that Twitter's response is that it is a valid and properly scoped request? So no, not exactly, but yes, with the law of the land being into the place, if the country raises alarm on a particular type of content, then these social media follow those guidelines, because every nation may have certain differential way of dealing with a particular content. In this case, India has raised issue over Pakistani government Twitter handles trying to spread misinformation against India. In June, Twitter
in India had banned official accounts of Pakistan embassies in UN, Turkey, Iran, and Egypt. In August, India blocked 8 YouTube-based news channels, including one operating from Pakistan and one Facebook account for posting fake anti-India content online. So far, hundreds of such social media handles have been blocked or taken down, or their content is not visible in India. And this has been the recent days how Indian government is trying to create some mechanism to block those accounts which have been trying to create misinformation and spreading rumors against India and Indian agencies. Thank you very much, Abhishek. But now we're shifting our attention to the Congress presidential polls. According to sources ahead of the Congress chief poll results, Mallikarjun Kharge has given his resignation to Sonia Gandhi as leader of opposition of Rajya Sabha. On Friday, Kharge filed his nomination for the Congress president poll. So this resignation is in line with the one man, one post Udaipur resolution, and now the resignation is with Sonia Gandhi. Mallikarjun Kharge, Shashi Tharoor and K.N. Tripathi are 3 men in the Congress presidential race. Nominations have ended on Friday, with Kharge from Karnataka emerging the favourite. Going across to my colleague Pallavi Ghosh, who brings us more details on this. Pallavi, the fact that he has resigned leaves a gaping hole in the Rajya Sabha. So what are your sources telling you? We were earlier discussing how the emerging winner might be somebody from the Hindi heartland. That's right. I mean, we cannot have both the LOP as well as the president from the same region, which would be South. Already there were question marks and concerns being raised with having someone from South as the Congress president, because we all know, Shilpa, that at the end of the day, the politics or political gains come in from North, and the Hindi heartland belt is something where the Congress is very weak. So whenever they look for a replacement for Kharge, Digvijay Singh remains a front runner, because obviously he comes in from Madhya Pradesh. He's again a very senior leader, a veteran. And if we look at the kind of leaders who are there from the Congress party in Rajya Sabha, most of them, there are very few seniors left. I mean, Azad, Anand Sharma, all of them have finished their term. Kapil Sibal is no longer with them. So as of now, Digvijay Singh certainly remains the best bet for the LOP, which has been decided by the Congress party. I think we'll get a clarity perhaps in a day or two, because the parliament session is still long away, to decide who's going to be the person who's going to replace Mr. Kharge. Pallavi, do stay with us, because in the same vein, we are getting some breaking news regarding Kharge's meeting. Kharge meeting A.K. Antony at Kerala House. A.K. Antony will be leaving for Kerala today. Joined by my colleague Shireen Elizabeth, who brings us details. She's live with us from New Delhi. Shireen, do bring us up to speed. Yesterday, Mallikarjun Kharge today went to Kerala House, where A.K. Antony is in fact staying, and he had a brief meeting with him, after which he told media that it was a courtesy meeting because A.K. Antony is leaving for Kerala today. That is why he came to meet him. And remember, A.K. Antony is one of the first proposers of Mallikarjun Kharge's nomination. There were about 14-page proposals, candidate proposals who had in fact given, and A.K. Antony was in fact one of them. And today he has in fact met. After meeting, he said that this was just a courtesy meeting, but also to the question that whether the fight between Shashi Tharoor and Mallikarjun Kharge is going to be a friendly fight, to which Mallikarjun Kharge said that this is not an individual fight, but this is in fact a fight for Congress. This is in fact to build the confidence, the power back in Congress, is what the statement that was given by Mallikarjun Kharge. Going across to Pallavi Ghosh to tell us, Pallavi, we know the big split in Congress. Do tell us about the kind of support Mallikarjun Kharge and Shashi Tharoor are receiving when it comes to this presidential race between them. We will try to re-establish that line. Going back to Shireen for those details. Shireen, coming to you for those details. Now we have 3 candidates in the presidential poll, but it looks like Mallikarjun Kharge and Shashi Tharoor are the names that senior leaders are opting to side with, while Mallikarjun Kharge remains the clear favourite. Do take us through the leaders who have taken side so far.
Well, absolutely. Though there are, in fact, three people who have filed their nomination, but it seems to be, in fact, a fight between Mallikarjun Kharge and Shashi Tharoor. And in fact, we have seen how the senior leaders, a number of them, in fact, if you see the proposers' name, there were about 14 pages of people who have proposed the name of Mallikarjun Kharge, and clearly a contrast when it comes to the proposal. We are seeing that the senior leaders, in fact, the G23 leaders have also supported Mallikarjun Kharge, whereas in fact the new leaders or the young ones that in Congress are the ones who have supported Shashi Tharoor, like Karti Chidambaram, Sandeep Dixit. These are the names who have supported Shashi Tharoor. So clearly the favourite, it seems, to be Mallikarjun Kharge. But of course we have to see in coming days that how this fight goes on. This specific question was in fact asked to both Shashi Tharoor and Mallikarjun Kharge, whether it's going to be a friendly fight, to which Shashi Tharoor has said that yes, this is going to be a friendly fight, whereas Mallikarjun Kharge said that this is not an individual fight. This is about the organization. This is about Congress as a party, and this is a fight for Congress. So these are, of course, the statements that are coming at the point at this point. But a day after filing his nomination, we are seeing that Mallikarjun Kharge went to meet all the way to A.K. Anthony, and A.K. Anthony is someone who was the first one to propose the name of Mallikarjun Kharge, and now he's leaving for Kerala. So this comes as a courtesy meeting, is what Mallikarjun Kharge has said. Thank you very much for bringing us up to speed, Shireen. There's a breaking news coming in at this point from the technology sector. Rupees 5,551.27 crores seized by the ED from Xiaomi India. This is the highest amount of seizure orders in India. The company unauthorizedly remitted this amount in the guise of royalty abroad, which constitutes a violation of Section 4 of the FEMA. Xiaomi India also filed a petition before the Karnataka High Court against the said order, which was dismissed by the High Court on July 5th. ED probe is in line with illegal remittances made by the company in February this year. So this big news being brought to us by Ashish Meshi, who brings us the latest from the ED. Ashish, now the ED heat on Xiaomi turning up there. What are the next line of action that we can expect? So we've already seen lots of action by, the Indian investigative agency against Chinese companies, and this is a part of that. We've already seen that Xiaomi Technology India Private Limited, which is a registered company in India, it has been transferring huge amount of funds out of India in the garb of royalty payments. Now, interestingly, this is in violation of the Foreign Exchange Management Act. That is what the claim of Enforcement Directorate is. And, there is a competent authority, which is the adjudicating authority. In this case, they have confirmed their attachment. So the amount, which is 5,551.27 crore rupees, which was sent to the, three foreign-based entities, group entities to China, it stands frozen, it stands seized as of now. That is what the adjudicating authority has confirmed to Enforcement Directorate. So certainly a big victory for them, because we have already seen lots of action. We have already seen action against Vivo as well. We have seen action against other Chinese companies as well. So certainly a big victory for them, at least in the case where, money was being sent in the form of royalty, which is in violation of the Foreign Exchange Management Act. Ashish, if you could break it down for us, the fact that Xiaomi India has said they sent the funds abroad in guise of royalty, which is a violation of the FEMA. Can you take us through India's rule book, and exactly how they violated that? So, royalty payments are not allowed under FEMA. That is what the Foreign Exchange Management Act says. So money that has gone out of India, that is where the violation is, that the money should not have gone out of India in the garb of royalty payments. That is where the violation is. So this is the violation that is, which is under the provisions of Section 37A of FEMA. It says that, the money cannot go out of India. So the money that was supposed to stay in India has gone out of India, and it has gone to at least three foreign entities, which are basically subsidiaries, or you can say a part of the Xiaomi group. So the money went out of India. That is where the violation is. So here, that and it went in the garb of royalty payments, which was basically unauthorized. So this is where the violation is, and that is why it stands attached, or you can say the attachment is confirmed by the competent authority.
Thank you, Ashish, for explaining that for us. With some breaking news coming in from Kerala at this point. Official sources say the centre has accorded Y category security cover to 5 RSS leaders in Kerala in view of possible threats to them. We're learning that these leaders in Kerala are possibly on PFI's hit list, and remember, following the ban on PFI, there are concerns about retaliation. Going across to my colleague Arunima, who brings us more details on this. Arunima, we've seen RSS workers being under attack, be it in Kerala or Karnataka, and now with Y category security being accorded to them, can we see that being followed in other states, especially those down south currently? This comes in wake of the Popular Front of India getting banned as well. There is a revised security assessment that has been done of the RSS leaders. Investigation by the NIA and the state agencies have led to evidence to suggest that RSS leaders, affiliate organizations of RSS, have all been on the radar of PFI even before they were banned. So in light of that, the security from the Central Reserve Police Force will be accorded to them. It's a Y category security that these leaders will now enjoy, which means a personal security officer as well as protection at their premises, both official and residential. Thank you, Arima, for bringing us those details. So staying on Kerala, though, some more breaking news coming in from there. Now, this is a big development in the Kerala gold smuggling case. The plea filed by the Enforcement Directorate seeking transfer of Kerala gold smuggling case to Bengaluru. The Supreme Court will hear this case on the October 10th. ED in its plea says efforts being made by state machinery to thwart investigation. The ED says the probe should be transferred outside Kerala for a fair trial. ED claims state machinery interfering in probe at every stage. So we know that there was some connection that was being alleged with the Chief Minister Pinarayi Vijayan, and now this is a big claim being made by the ED saying that efforts being made to thwart the investigation by state machinery. And now the Supreme Court slated to hear this matter on the October 10th. The Kerala gold smuggling case is something which has been plaguing the Kerala government, and connections to it have been investigated in the last few months, and heat is being turned on the Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan. Going across to my colleague Ananya Bhatnagar, who brings us this breaking news. Ananya, now this is a big claim being made by the ED that its efforts are being made to thwart its investigation by the state machinery. Well, definitely, Shilpa. And remember that this petition was filed in March, in fact, in July this year, and we were the first ones to break it down. CNN was the first one to exclusively access this petition. But it's been clearly said that the efforts were being made to thwart the state machinery because there are very, very powerful people involved, including one of the IAS officer, which was very close to